So synthesized inside the body. Biogenic amine synthesized inside the body and has a wide distribution in the plant as well as animals. Biohydroxytryptamine. Now it is found in the venom of your scorpion. जो बिच्छू होता है उसके venom में भी मिलता है. Okay, it has a physiological important role in the body. Highest amount of this serotonin, highest amount of this biohydroxytryptamine is found in the pineal gland. Remember, okay, because this biohydroxytryptamine is a precursor for melanin, and that's why it is found in the highest amount in the pineal gland. And after that, it is also found in the GIT. So in the GIT, there is a specific cells known as a enterochromatin cells. Enterochromatin cells. Okay, so there is also you will find this biohydroxytryptamine. ये आपके GIT का जो ल्यूमेन होता है उसमें भी एंटेरोक्रोमेटिन सेल होते हैं और उसमें भी ये पाया जाता है biohydroxytryptamine, and that's why before it was called serotonin. Before that it was known as enteramine because most of this biohydroxytryptamine is found in the intestine. Okay, that's why it is also known as enteramine. Now this biohydroxytryptamine is synthesized from one essential amino acid known as a tryptophan. So tryptophan is an essential amino acid that is hydrolyzed to the biohydroxytryptophan. So tryptophan will get hydrolyzed to biohydroxytryptophan by hydrolysis. Biohydroxytryptophan hydroxylase in them. Then you will get biohydroxytryptophan. After that, there will be decarboxylation of this biohydroxytryptophan, and you will get biohydroxytryptamine. That is a serotonin. It is a structure of your. Now it is a synthesized, stored, and released locally. So it is also synthesized in the GIT and stored in the enterochromatin cells. It is also synthesized in the brain like a biogenic amines. So they are also synthesized in the brain locally in the synapse and stored in the synaptic vesicle. After release, it is metabolized by two enzymes. First enzyme is nothing but the MAO, monoamino oxidase. So MAO will metabolize this biohydroxytryptamine into biohydroxyindole acetic acid, 5-HIAA. So MAO will metabolize monoamino oxidase. Enzyme will metabolize this serotonin into biohydroxyindole acetic acid. Again, in the peri-peri, it is also metabolized by dehydrogenase enzyme to the biohydroxytryptophan. So these are the metabolites. Remember the metabolites of this serotonin: biohydroxyindole acetic acid and hydroxytryptophan. Particularly this biohydroxyindole acetic acid, ये जो metabolite है, so it is increased in case of one syndrome known as a carcinoid syndrome. ये क्या होता है कि कार्सिनॉइड सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम होता है. दैट इज नथिंग बट द ट्यूमर ऑफ योर इंटेस्टिनल सेल्स. सो जो एंटेरोक्रोमाटिन सेल होते हैं इंटेस्टाइन में, so that is a tumor of enterochromatin cell, and that is known as a carcinoid syndrome. And in that case, due to increased or excessive production of biohydroxytryptamine, some symptoms are there. Okay, and that carcinoid syndrome can be diagnosed by this metabolite. So if there is increased in the biohydroxyindole acetic acid in the body, if there is increased amount of this, okay, 5-HIAA, so that means you are suffering from carcinoid syndrome. So it will come again later, don't worry. So just understand how there is a synthesis of biohydroxytryptamine, how there is a metabolism of biohydroxytryptamine. Okay. Now I have told you the distribution and all that. We will see in the detail. So biohydroxytryptamine is also known as a serotonin. It is also known as a serotonin. Biohydroxytryptamine is also known as serotonin, and it is biosynthesized from essential amino acid known as a tryptophan. So it is a biogenic amine distributed in the mast cell. Okay, then platelets. The highest amount of this serotonin is found in the pineal gland. Okay, because this biohydroxytryptamine is a precursor for melanin. Okay, melatonin. Then serotonin is synthesized from essential amino acid tryptophan. It is also known as enteramine. Enteramine क्यों बोलते हैं इसको? See, it is found in the intestine. It was isolated from intestine. Scientists ने इसको isolate किया था intestine से. So it is known as the enteramine cytokine. As 90% of serotonin is localized in the, so that's why it is sometimes also known as the enteramine. So don't get confused. Biohydroxytryptamine is also known as a serotonin or also known as a enteramine. Okay. Now when this will be released from the storage site,
whether it is whether it will be released in the brain or intestine. So it will act on its different receptor. So what are the different receptors of serotonin? ये pyruvate का receptors कौन से हैं? So this compound is related with 2-3 condition. Okay, ये तो serotonin level जो है it is very important. ये 2-3 condition में increase or decrease हो जाता है, manipulate करते हैं. So whether various drugs they used to manipulate the level of this serotonin. Okay, for example, it also comes in the antipsychotic chapter. The serotonin also comes in the, it has an important role in the your wakefulness of your mind. So antidepressants they act by inhibiting the its reuptake. Okay, then again this serotonin is also important in the pathological condition of migraine, and it is also important in the emesis vomiting जो होता है आपको. So there are different kind of receptors of this serotonin: 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4, up to 5HT7. There are around 7 receptors of 5HT. Okay, or there are 7 receptors of serotonin, but only 5 has been identified and studied for their pharmacological effect. Okay, so out of 7. So remember 5-hydroxytryptamine receptor 1, 5HT1, 2, 3, 4. 5-hydroxytryptamine receptor 1, 2, 3, 4. These are known as a G protein coupled receptors. They are linked with the G protein coupled receptor. और उनका nature क्या है? G protein coupled receptor. So remember over here 5-hydroxytryptamine receptor 1, 2, 3, 4. Okay, these are the 5-hydroxytryptamine receptor or serotonin receptor 5HT1, 2, 3, 4. Out of these receptors, okay, out of these receptors, 5HT1, then 5HT2 and 5HT4, these are known as a G protein coupled receptor, or they belongs to family of GPCR. Okay, remember यहाँ पे क्या है? 5HT1, 5HT2, 5HT4, not 3, and 5HT3 is known as a ion channel or ionotropic receptor. So 5HT1, okay, 5HT2, 5HT4, 5HT5. So these are the metabotropic receptor, whereas 5HT3 is nothing but the ligand gated ion channel or ionotropic receptor. Okay, इसके ऊपर भी as it is question आ चुका है. So one of the following 5HT receptor is ionotropic in nature. So 5HT3, remember. Okay? So 5HT3 ionotropic होता है. 5HT1, 2, 4, 5 और बाकी जो है वो सब G protein coupled receptor होती है. Now significance of serotonin, or what is the significance or what is the importance of serotonin in the body? ये क्यों है body में serotonin? Significance of serotonin in the body. So first, it acts as a neurotransmitter. So it has a role in the neurohumoral transmission. So it is a neurotransmitter released by tryptaminergic neuron or tryptaminergic neuron. So it is a neurotransmitter released by tryptaminergic neuron. It is involved in the regulation of dampening of overactiveness. जो आपका एक्टिवनेस होता है उसको रेगुलेट करता है ये कौन? सेरोटोनिन. So your activeness is regulated by this serotonin. Okay, then it is also involved in the state of consciousness. So this serotonin is involved in the regulation of dampening of overactiveness to a various stimuli of state of consciousness. Then disturbance of this serotonin, disturbances of dopaminergic function or disturbances of serotonin may leads to disturbance in the sleep, then appetite, then mood, then sexual behavior and motor activity like perception. Okay, so change or disturbance in the this level of serotonin is related with the disturbance in the sleep, disturbance in the appetite, disturbance in the mood, disturbance in the sexual behavior, motor activity, perception, and it is related with the migraine. जो भी डिस्टर्बेंस होगा उसका लेवल का, जो सेरोटोनिन का लेवल होता है उसका अगर डिस्टर्ब हो गया वो, तो आपको स्लीप का डिस्टर्बेंस आ जाएगा, आपका एपेटाइट का डिस्टर्बेंस आ गया, मतलब एपेटाइट हैबिट, भूख लगना नहीं लगना. ओके, देन मूड, सेक्सुअल बिहेवियर, मोटर एक्टिविटी एंड परसेप्शन एंड माइग्रेन. सो दैट इज द neuronal importance of this serotonin. Then again, 5-hydroxytryptamine controls the sleep awakefulness of individual in circadian rhythm. Okay, so जो sleep cycle है, sleep awaking cycle, जो आप normally दिन में जागते हो रात में सोते हो, तो उसका एक particularly हर एक बंदे का साइकिल होता है, उसको बोलते हैं
circadian rhythm. So sleep, waking and sleep, sleep, awaking and sleep. So it is a normal cycle known as a circadian cycle, circadian rhythm. That is also controlled by this bioadaptive dopamine or serotonin. It is also a neurotransmitter in the brain. It controls the behavior, awakefulness of the individual, and controls the circadian rhythm. So this again, disturbances of serotonin level causes certain psychic disorders like schizophrenia, affective disorders. Okay? So disturbance of this serotonin level in the brain may leads to psychiatric disorder. जैसे आपको सिजोफ्रेनिया हो सकता है उसमें, या फिर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, एंड आल्सो रिलेटेड टू मूड, इमोशन, रिवॉर्ड ऑफ मेमोरी. Serotonin, selective serotonin reuptake inhibitors, they are also used in the depression. Okay, that means this serotonin is responsible for the activeness. तो आपका activeness कितना है? It is also it is also क्या बोलते हैं उसको, hormone responsible for the happiness. So serotonin reuptake inhibitors, they are used in the treatment of depression. Okay? जैसे आप डिप्रेस होगा मतलब क्या होगा, आपको डिप्रेशन में चले गए मतलब क्या, यू विल लॉस ऑल द इंटरेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग. आपको बाहर के इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा. ठीक है, आपको खुद में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप खोए खोए से रहोगे, डिप्रेस रहोगे. सो बिकॉज दिस सेरोटोनिन इज इन्वॉल्व इन द एक्टिवनेस ऑफ योर इंडिविजुअल. ये आपका बॉडी का एक्टिवनेस जो है, आपके माइंड का एक्टिवनेस जो है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इफ द लेवल ऑफ सेरोटोनिन goes down, that means you will suffer from depression. So we have seen in the antidepressant chapters all the serotonin reuptake inhibitor. Okay, not only serotonin is involved in the depression. डिप्रेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ सेरोटोनिन का ही रोल है. डिप्रेशन में आपका नॉर एड्रेनलिन का भी रोल होता है, नॉर एड्रेनलिन का रोल होता है, बाकी के बायोजेनिक अमाइंस का भी रोल होता है. सो इट इज नॉट अ सिंगल. देन again, this serotonin is responsible for the emesis, anti-emesis and migraine. So it also has a role in the vomiting and migraine. So 5HT3 receptor, which is a ion channel in nature. So 5HT receptor 3, 5HT3 receptor antagonist will prevent the emesis. So serotonin का लेवल बढ़ गया तो आपको emesis हो जाएगा, मतलब vomiting हो जाएगा, या फिर migraine हो जाएगा. अगर लेवल कम हो गया तो migraine हो जाएगा. 5HT3 antagonist will prevent the emesis associated with the anti-cancer drug and radiotherapy. Okay, radiotherapy. So इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. So ondansetron is the name of drug. Ondansetron is a selective 5HT3 antagonist and it is a drug of choice in the anti-cancer drugs. Vomiting induced by anti-cancer drug. इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. The drug of choice in preventing the vomiting associated with the anti-cancer drug or radiotherapy, that is nothing but the ondansetron. ये बाद में आएगा आपको पैसे. That is a 5HT3 antagonist. Then again, so 5HT3 receptor is associated with the vomiting. Okay, and that's why 5HT3 blocker or antagonist, they are used as a anti-emetic. Okay, like ondansetron, granisetron, all that. In 5HT1 receptor stimulation are associated with the migraine. जो 5HT1 receptor होता है ये ब्रेन में होता है. So 5HT receptor, 5HT1 receptor is present in the brain. So serotonin will go on act on that receptor and will cause cerebral vasodilation or cranial vasodilation. Because of that, there is a headache, throbbing headache, and it is known as a migraine. It is associated with migraine, which occurs in a certain cranial blood vessel. Activation of these receptor causes constriction of blood vessel. Activation of these receptor causes constriction of blood vessel, and that's why there is a migraine. Okay, so now because of that is not okay. So if there is a vasodilation, cranial vasodilation, cerebral के blood vessel का dilation हो गया, तो उसमें क्या होगा, dilation होने के बाद तो उसके ऊपर जो nerves है वो press हो जाएंगे. So if there is a cerebral vasodilation, okay, there is a pressing of your sensory nerve and that causes the headache. Okay, so 5HT receptor 1 stimulation is associated with the vasoconstriction, and that's why 5HT1 agonist like sumatriptan and all the triptans, sumatriptan and all that, they are used as an anti-migraine drug or drug used in the migraine therapy. In the GIT, so enterochromapine cells of GIT tract forms a major source of circulating serotonin. तो इसमें जो enterochromapine cells होते हैं GIT के, उसमें serotonin यहाँ पे synthesize करके locally store किया जाता है, and it acts as a local hormone over there,
and it is responsible for the initiation and maintenance of intestinal peristalsis. तो आपका जो पेरिस्टालसिस होता है, जैसे खाना खाया तो मॉर्निंग में आप निकालने के लिए जाते हो, so whatever peristalsis is there, so that is because of that serotonin. Okay, so it is also present in the intestine, that's why it is known as an enteromin, and it maintains the peristalsis over there. Now what is the significance of this serotonin on cardiovascular system? So it causes vasoconstriction blood vessels like renal blood vessel, then pulmonary blood vessel, then splenic blood vessel, cerebral blood vessel. So they causes vasoconstriction. ये जो सेरोटोनिन होता है क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा. कहाँ पे? रिनल का ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, पल्मोनरी ब्लड वेसल, स्पेलेनिक ब्लड वेसल, सेरेब्रल ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा. Okay, and it also has a positive inotropic and positive chronotropic effect on heart. So what is meant by positive inotropic, what is meant by positive chronotropic effect? So as I already told you this effect. So what do you mean by positive inotropic? So if any drug which increases the force of contraction of myocardium, कोई ड्रग अगर आपके मायोकार्डियम का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक. अगर कोई ड्रग आपके मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करता है तो उसको बोलेंगे निगेटिव आइनोट्रोपिक. अगर कोई ड्रग आपका हार्ट रेट बढ़ाता है दैट इज नोन एज पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक. कोई ड्रग अगर हार्ट रेट डिक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं निगेटिव क्रोनोट्रोपिक. So positive inotropic means increase in the force of contraction, and positive chronotropic means increase in the heart rate. So this serotonin also has a positive inotropic and positive chronotropic action on heart. It causes vasoconstriction, and overall effect is a increase in the blood pressure because of vasoconstriction, positive inotropic action on heart. Okay, so it increases the blood pressure. Now, what is the action on platelet? So this serotonin is also found in the platelet. So serotonin का distribution कहाँ पे? ब्रेन में है आपके, देन आपके जीआईटी के एरिया में है, ठीक है, ब्रेन में है, जीआईटी के एरिया में है, प्लेटलेट्स में है. उसके बाद जो मास्ट सेल होता है, नाउ एज इन द मॉर्निंग सेशन वी हैव सीन द हिस्टामाइन, ओके, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन एंड हिपेरिन. हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, all these they are stored together in the mast cells. Okay, because histamine is a basic in nature and it is stored along with the acidic substance known as the heparin, which is an anticoagulant, along with the acid protein. ठीक है, तो ये होता है. तो प्लेटलेट में भी इसका सर्कुलेटिंग भाइएस्टी along with the other mediator they causes platelet aggregation and inflammation. Okay, so what is the role in the platelet aggregation? Serotonin will cause platelet aggregation. Also, serotonin mechanism are involved in the control of release of certain hormones, like your like your sex hormone. Sex hormones also controlled by this serotonin. Now, carcinoid syndrome. Carcinoid syndrome. You have to remember this carcinoid syndrome. So it is a tumor of enterochromatin cell in the GIT. आपका जो GIT है उसमें enterochromatin सेल होते हैं जिसमें आपका सेरोटोनिन स्टोर होता है. enterochromatin मतलब वही मास्ट सेल. ओके, मास्ट सेल. मास्ट सेल अगर जीआईटी में तो उसको बोलेंगे एंटेरोक्रोमाटिन सेल. सो बिकॉज ऑफ द ट्यूमर ऑफ एंटेरोक्रोमाटिन सेल, ओके, जीआईटी, then there is a increased amount of this serotonin and then histamine and all that. Okay, carcinoid syndrome is characterized by intermediate accomplishing hypertension, bronchospasm and colicky diarrhea. क्यों होता है ये? सिम्टम्स क्या है इसके? देखो. So this carcinoid syndrome is characterized by intermediate accomplishing hypertension. Obviously, so carcinoid, what is meant by carcinoid syndrome? There is an abnormal increase in the enterochromatin cell because it is a tumor, and enterochromatin cell consists of histamine, serotonin and all that. Okay, forget about the histamine, just remember the serotonin now. Now serotonin, you know that it has a role in the peristalsis. It has a positive inotropic action on heart. It has a it has a constriction. It is a vasoconstrictor. सो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. सो हाइपरटेंशन. ब्रोंकोस्पाज्म, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है. सो ब्रोंकोस्पाज्म. ओके, देन बिकॉज ऑफ दैट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सो इट विल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल ऑफ योर जीआईटी. सो कोलिक मींस पेन इन द एब्डोमेन. ओके, देन डायरिया. सो दैट्स व्हाई दीज आर द सिम्टम्स, बिकॉज ऑफ द excessive amount of serotonin, circulating serotonin, because of that tumor of enterochromatin cells. Now there is one drug known as a chlorpheniramine. Which inhibits the synthesis of serotonin. Along with it, ciproheptadine
and methyl sargide is also useful in this carcinoid syndrome. अब ये carcinoid syndrome हो गए तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट होना चाहिए ना. So which drug are used? This chlorpheniramine, then cyproheptadine and methyl sargide. Out of that, chlorpheniramine inhibit the synthesis of serotonin, and cyproheptadine is a serotonin receptor antagonist. Methyl sargide is also antagonist. Okay, so these drugs are useful in the carcinoid syndrome. They may ask you a question regarding this carcinoid syndrome is because of the increased level of one of the following. They will give you the option like acetylcholine, noradrenaline, dopamine, 5-hydroxytryptamine. So it is increasing the 5-HT level because of tumor of your enterochromatin cells. Now we'll see the next. Now what are the different receptors? We have seen there are several receptors for 5-hydroxytryptamine, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 receptors. Out of that we will discuss only 4 because last 3 are not important. They are not well established. So because there are different receptors for serotonin, so it will have varying number of action. Number of drug will modulate. Number of drug will modulate the action of this serotonin. Number of drug will alter the action of serotonin. So just remember the receptors. We'll see the receptor. Now in the first call, receptor, nature of signaling, types and location, and what is the function. So 5-HT receptor 1, 5-HT1, 5-HT1 receptor. So it is a, as I have told you, the nature is nothing but the G protein coupled receptor. 5-HT1 का nature क्या है? GPCR, G protein coupled receptor. So activation of this 5-HT leads to inhibition of adenyl cyclase, and then inhibition of phosphorylation, and then effect. Okay, most of the time it is a inhibitory in nature. Now where is the location of this receptor? So this 5-HT1 has a different subtypes. उसके 5-HT1 के भी subtypes होते हैं. 5-HT1A, 1B, 1C, 1D. Okay, so 5-HT1A is located in the raphe cell bodies and dendrites of the hippocampus, where it has a function of mood and behavior, anxiety, then feeling, thermoregulation. It is a type of autoreceptor which regulate the release of 5-hydroxytryptamine. 5-HT1 रिसेप्टर कहाँ पे है? ये ब्रेन में रहेगा, रैपिड सेल बॉडीज डेंड्राइट्स, मतलब जो नर्व सेल होते हैं उसमें रहेगा, हिप्पोकैम्पस एरिया ऑफ ब्रेन. ठीक है, उसका रोल क्या है? मूड को मॉनिटर करना, बिहेवियर, एंजाइटी, ओके, फीलिंग, थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन. एंड इट इज टाइप ऑफ ऑटो रिसेप्टर व्हिच रेगुलेट द रिलीज ऑफ 5-HT. देन 5-HT1 का दूसरा सब टाइप क्या है? 5-HT1B. 5-HT1, so it is located on the CNS and vascular smooth muscle. So it has a role in the behavior, then pulmonary, it causes pulmonary vasoconstriction. Activation of this 5-HT1B causes behavior changes, pulmonary vasoconstriction, presynaptic inhibition of dopamine, presynaptic inhibition of serotonin. Then third type of this 5-HT1 receptor is 5-HT1D. Now it is located on the presynaptic axonal terminal of the substantia nigra and basal ganglia. मतलब substantia nigra part में जो सेरोटोनिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं या फिर ट्रिप्टामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं उसमें ये रहेगा. प्रीसिनेप्टिक axon का टर्मिनल है उसमें रहेगा ये basal ganglia and cerebral muscle. So here it causes cerebral vasoconstriction and mind. Okay, cerebral vasoconstriction. R2 receptor है, regulate the dopamine release in that. Then the next one is a 5-HT2 receptor. 5-HT2. It is again G protein coupled receptor, and related with the secondary messenger is the activation of this 5-HT2 receptor leads to activation of phospholipase C and phosphorylation. Okay. Then it is also this 5-HT1 is a stimulatory in nature. 5-HT2 is an inhibitory in nature. Okay. 5-HT2 also has a subtypes 5-HT2A, B, C, D. Like. Okay. So 5-HT2A is located in the frontal cortex, and it is also found in the platelet, smooth muscles, and also found in the ANS. Here the role of this 5-hydroxytryptamine is nothing but the neuronal excitation, behavior, lipid aggregation, and contraction of smooth muscle. So then 5-HT2B located on the gastric fundus. तो जो आपका जो स्टमक है उसका जो ऊपर वाला एरिया होता है फंडस, वहाँ पे 5-HT2B होगा.
So there it causes contraction of gastric bundle. Then 5HT2C, 5HT2C located on the choroid plexus, and where there is a, it involves in the secretion of cerebrospinal fluid. Then 5HT3, now this 5HT3 is the ion channel. ये क्या है? Ion channel है, ligand operated ion channel और inotropic receptor. बाकी क्या है? Metabotropic है. याद रखो, क्वेश्चन आ चुका है इसका. Now this 5HT3 is located in the cholinergic terminals of GIT. Cholinergic terminals of GIT. GIT का जो भी वेगस नर्व है GIT, तो वहाँ पे जो cholinergic terminal है वहाँ पे 5HT3 receptor रहेगा. And is also present in the post-terma area and hippocampus, where it regulate the emesis. In the GIT it regulate the emesis. Emesis मतलब vomiting. And in the neuron it regulate the neuronal excitation. Now next one is the 5HT4 receptor. So it is again G protein coupled receptor, and activation of this receptor causes activation of adenyl cyclase. So it is again a stimulatory. So remember यहाँ पे 5HT1 and 5HT, they are stimulatory in nature. 5HT2 is inhibitory in nature. 5HT3 is a ion channel. So 5HT4 is present in the superior and inferior hippocampus, smooth muscle and GIT secretory cells. So what is the role? Neuronal excitation, peristalsis and stimulation of secretion. So these are the different receptors of your serotonin. Again you can see over here, ये अलग book में से. So different receptors of 5HT. ये receptor भी important होते हैं. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कौन किसका agonist है. One is 5HT1. 5HT1 having different subtypes. 5HT1A होता है, 5HT1B होता है, 5HT1C. So 5HT1A, it is the autoreceptor found in the presynaptic neuronal, and where it modulates the release of serotonin, controls the release of serotonin. Now partial agonist for this 5HT1A receptor like buspirone, then isapirone, JP-pyrone. Okay, so pyrone जो होते हैं, buspirone, isapirone, JP-pyrone, all these are the 5HT1A partial agonist. Okay, actually these are the drug used in the psychosis. These are the drug used in the psychiatric treatment. We have seen this buspirone, isapirone and JP-pyrone. So useful as a anti-anxiety. So agonist to this partial agonist to the 5HT1A receptor. 5HT1A receptor, they are useful as an anti-anxiety or anxiolytic. Let's come to the 5HT1B and 1D receptor. 5HT1B, 1D receptor. So it causes the constriction of cranial vessel. It causes the constriction of cranial vessel. आपके जो खोपड़ी है, खोपड़ी में जो ब्लड वेसल है उसका क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कंस्ट्रिक्शन करेगा. नाउ एगोनिस्ट टू 5HT1B और 1D. So for example sumatriptan, then naratriptan. So triptans, they are nothing but the agonist to 5HT1B, 1D, and they are useful in the treatment of migraine, acute attack of migraine. They are useful in the treatment of acute attack of migraine. Now third one is nothing but the 5HT2A और 5HT2C. ठीक है, 5HT2 रिसेप्टर जो है उसके भी सब टाइप होते हैं. 5HT1A, 1A, 5HT2A, 2B, 2C. 5HT2A और 2C is responsible for the most of the direct action of serotonin. जो भी serotonin की जो direct action है, जैसे आपका, so most of the direct action of serotonin is because of the 5HT2A, 2C receptor. Ketaserine, retaserine, these are known as an antagonist to 5HT2 receptor. Ketaserine, retaserine, they are antagonists to this 5HT2A, 2C receptor, and they are potentially useful anti-hyperreceptor. Then agonist कौन है? Clozapine and risperidone. They are known as atypical antipsychotic agent that act through antagonistic activity at this receptor. तो ये भी antagonist है. Clozapine होकर के, clozapine, risperidone, atypical antipsychotic. This 5HT3 receptor. So it is an ion channel in nature, inotropic receptor. All other 5HT receptor are G protein coupled receptor. ये याद रखो. Now mediate most of the reflex and indirect action of serotonin. Direct action कौन mediate करता है serotonin का? 5HT2, 2C, 2D, 2C, sorry 5HT2A, 2C, and indirect action कौन करता है? 5HT3. So antagonist कौन है इसका? 5HT3 का, इसका antagonist है ondansetron. So ondansetron, granisetron, picetron, ondansetron. These are the agent. They are the drug of choice in the chemotherapy induced vomiting. ठीक है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग में ड्रग ऑफ चॉइस कौन है?
ऑन्डेनसेट्रॉन, ठीक है, याद रखो इसको, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन एंड पाइसेट्रॉन. Now next receptor is a 5HT4. So it is present in the GIT and responsible for the increase in the peristalsis. जो peristalsis increase होता है, ठीक है, जैसे सेरोटोनिन रिलीज होगा वो उसके रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट होगा. ऐसा नहीं कि सेरोटोनिन हिस्टामाइन के रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट होगा. तो हर एक का रिसेप्टर रहता है. जैसे एड्रेनालिन का होता है अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, है ना. जैसे एसिटिल कोलिन का होता है निकोटिनिक एन रिसेप्टर एंड मस्कर्निक रिसेप्टर. सो M1, M2, M3, NM and NM. तो हर एक का अपना रिसेप्टर होता है. जैसे उसका 5-HT का 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4, 5HT5 and their subtypes. Now 5HT4 has a agonist like cisapride. इसका agonist होता है cisapride, mesopride, then renzapride. These are the agonist for the 5HT4 receptor, and these are drug used as a prokinetic drug. Cisapride, mesopride, then renzapride. Okay, useful as a treatment of. They are useful in the treatment of GERD. They are known as a prokinetic. मतलब जो मूवमेंट हो रहा है आपका, मूवमेंट हो रहा है या फिर रिवर्स हो रहा है. जिससे होता है आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो आपके गले में आता है वो खाना, रिवर्स आता है. So ideally that food should go downward direction. But if you eat much or it comes return, so that is nothing but the gastroesophageal reflux disease. And for the treatment of that, cisapride, mosapride, renzapride, these are the prokinetic drugs. So they will correct the peristalsis. They are used. Now pharmacological actions of your serotonin. Pharmacological actions of bioadrenal. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या एक्शन है इसका. सो इट कंस्ट्रिक्ट द मेजॉरिटी ऑफ ब्लड वेसल को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा. जैसे पल्मोनरी ब्लड वेसल, रीनल ब्लड वेसल, स्पेनिक ब्लड वेसल, सेरेब्रल ब्लड वेसल को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा. सो इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स, डायलेट द स्केलेटल मसल ब्लड वेसल. ये स्मूथ मसल जो ब्लड वेसल है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन स्केलेटल ब्लड वेसल जो है उसको डायलेट करेगा. देन इट हैज अ वीक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव chronotropic effect on the heart. So it has a basically triphasic, not only biphasic. Actually, it is a triphasic. Triphasic response है. Biphasic नहीं है, triphasic. So it has a triphasic response on blood pressure. So blood pressure पे triphasic response पे initially blood pressure decrease करेगा, down करेगा. उसके बाद में immediately increase करेगा blood pressure and बाद में sustained decrease in the blood pressure. So blood pressure के ऊपर क्या action है इसका देखो. So blood pressure response on blood pressure, it has a triphasic response on blood pressure. Initial transient depression of blood pressure, then sudden rise in the blood pressure, and then sustained hypotension. So overall effect is hypotension, decrease in the blood pressure. Now what is the action of serotonin on CNS? So it causes slight or light stimulation. Now action on smooth muscle, तो उसके ऊपर क्या action है. So stimulation on and stimulation of tone and motility of GIT muscle. तो GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के जो मसल है उसका मोटिलिटी एंड टोन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा. दैट्स व्हाई इंक्रीजेस द पेरिस्टाल्सिस एंड इट कॉजेस ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. इसका ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है. सो दैट्स व्हाई. तो अभी आपको ये मालूम है कि ये सेरोटोनिन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है. तो सेरोटोनिन एगोनिस्ट जो ड्रग है वो भी क्या करेंगे, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेंगे एंड दे विल बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ अस्थमा. ये सब थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए. और मिसलेनियस एक्शन क्या है, रिडक्शन इन द वॉल्यूम, एसिडिटी एंड पेप्सिन कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस. नाउ एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. सो दिस बायोहाइड्रोक्सीटामाइन इज मेटाबोलाइज्ड बाय, इट इज नॉट ओके. सो आप ओरली उसको दे नहीं सकते. सो इट इज अ पायोजेनिक अमाइन एंड रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय इंटेस्टिनल एंड gastric and intestinal juices, and if it get absorbed, so again it is destroyed in the liver. So 5-HT1 is metabolized by two enzyme, monoamine oxidase enzyme, and we have seen that, but still it will metabolize by MAO, okay, to 5-hydroxy indole acetic acid or indole acetaldehyde, 5-hydroxy indole acetaldehyde, and then by sequentially two enzyme, aldehyde dehydrogenase and aldehyde reductase. Aldehyde dehydrogenase will convert into 5-hydroxy indole acetic acid. We have seen this, and then aldehyde reductase will convert into hydroxytryptophan. इसका metabolic product क्या है, final
5-hydroxy indolactic acid and trypto hydroxytryptanol. So ये जो 5-hydroxy indolactic acid है 5-HIAA in very first slide I have told you. So it is increased in case of carcinoid syndrome and it is the marker metabolite. So if you find this 5-hydroxy indolactic acid in your blood, that means you are suffering from carcinoid syndrome. यहाँ पे लिखा है पहले कि then what is the uses of this serotonin? So as it is a biogenic amine, it has no therapeutic use. इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको इसका फिजियोलॉजी समझना इम्पोर्टेंट है. आपको इसका फिजियोलॉजी समझना जरूरी है क्योंकि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग क्या करेंगे ये समझने के लिए. इसका 5HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे आर क्लासिफाइड इनटू 5HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट 5HT1A एगोनिस्ट. ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी एक दो बार पूछा है. बस पायरोन देन जो स्पायरोन्स दिखे थे अपने बस पायरोन पाइपायरोन ओके तो ईसा पायरोन. So those are nothing but the 5HT1 agonist. They are used as an anti-anxiety or anxiolytic. Then next is nothing but the 5HT-D antagonist. 5HT1-D antagonist. So sumatriptan. Okay, जो triptan है. So sumatriptan is drug used in the migraine. That is a 5HT1 agonist. 5HT1-D agonist. Then 5HT4 agonist. 5HT4 agonist like cisapride and all that. They are used in the treatment of GERD, gastrointestinal reflux disease. Then next one is nothing but the non-selective 5HT agonist. अभी ये selective नहीं है. जैसे ऊपर देखो 5HT1A agonist मतलब ये सिर्फ 5HT1A को ही stimulate करेगा. 5HT1D agonist तो ये सिर्फ 5HT1D को ही agonist मतलब stimulate करेगा. So 5HT4 agonist मतलब ये सिर्फ 5HT4 को ही stimulate करेगा. अभी क्या है नॉन सेलेक्टिव 5HT एगोनिस्ट मतलब इसको कोई लेन देन नहीं. 1 है 2 है 3 है 1A है 1B है 1C है ये सबको स्टिमुलेट करेगा. कौन है लाइसर्जिक एसिड LSD लाइसर्जिक एसिड LSD और लाइसर्जिक एसिड एंड अदर एग्जांपल इज नथिंग बट द अर्गोट अल्कलॉइड्स जो अर्गोमेट्रिन अर्गोटोक्सिन डायहाइड्रोक्सी अर्गोमेट्रिन so dihydro अर्गोमेट्रिन. All these are the non-selective 5HT agonist. Individual drug of important. ऐसा नहीं कि सब कुछ डिटेल में नहीं है यहाँ पे सिर्फ GPAT के लिए कितना इम्पोर्टेंट है नाइपर के लिए. So name of drug and comments. Now first drug is nothing but the sumatriptan and other triptans. sumatriptan बोला है मतलब ये कि sumatriptan नहीं बाकी उसके बंधु भाई भी आते हैं उसमें sumatriptan बाकी जो जिसके पीछे ट्रिप्टान लगा है. So it is an indole derivative. It is an indole derivative selective 5HT1 agonist. Selective serotonin receptor 5HT1 agonist. It causes vasoconstriction of extracerebral and cranial blood vessels. And remember, it is a drug of choice in case of migraine. In case of acute attack of migraine. So it is a drug of choice in the treatment of acute attack of migraine. Line याद रखो. Okay. This drug is metabolized by MAO. Adverse effect क्या है इसके? बाकी ज़्यादा कुछ important नहीं. Adverse effect heat sensation, then flushing at the site of injection, tingling in the hands, and occasionally may cause myocardial ischemia due to vasoconstriction. Then next drug is nothing but the cisapride. So it is a bipyridine benzamide derivative. Okay, which is a prokinetic drug used in the GERD. We have seen this. Then methyl sergide. So it blocks the action of 5HT on smooth muscle. And it is a congener of LSD useful in the management of migraine. Also useful in the diarrhea and carcinoid syndrome. Adverse reaction क्या है? GIT irritation, nausea, vomiting, then psychotic disturbances, vertigo and postural hypotension. Postural hypotension मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप standing position पे. So if you are standing, your blood pressure is normal and suddenly you sit on the chair. तो अपने चेयर पे बैठ गए तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. अब नीचे लेट गए तो और भी कम हो जाएगा. So change in the blood pressure due to change in the position, that is known as a postural hypotension. Now cyproheptadine. Okay, now this drug cyproheptadine has a different action, like it has a antagonistic action on histamine receptor, then serotonin receptor, then acetylcholine receptor. Okay, so it is a potent
antagonist to histamine, serotonin, and acetylcholine. Now it also acts as an anticonvulsant. It acts by stimulating the corticotropin releasing hormone and releasing factor from hypothalamus. And okay, so ये ड्रग क्या करता है, corticotropin हार्मोन जो है उसको रिलीज करता है हाइपोथैलेमस से, एंड वो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हंगर, आपको ज़्यादा भूख लगता है इससे। तो ये सिप्रोएटिडिन आप अगर आपने ले लिया तो आपका एपेटाइट जो है स्टिमुलेट हो जाएगा। सो इट इज एपेटाइट स्टिमुलेंट रिमेंबर, एंड इट इज used for the appetite stimulation in the children. It is used to relieve the headache. Okay, it is used to relieve the headache. उसके इसके माइग्रेन, प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन। प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या, प्रिवेंशन। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोविड-19, इसका मतलब है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का दवा कौन सा था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पहला वाला है। सो प्रोफाइलैक्सिस मींस प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, prevention cure. Okay, so it is used in the it is used to relieve the headache of migraine, then migraine prophylaxis, treatment of post gastrectomy dumping syndrome, and carcinoid syndrome, used to treat the relieve the seasonal and perennial pollinosis. Okay, जैसे पोलन ग्रेन का सीजन में क्या होता है, कभी कभी सीजन में जिस टाइम पे पोलिनेशन होता है उस टाइम पे पोलन ग्रेन ज़्यादा होते हैं और बहुत लोगों को एलर्जी होता है इसका। इट इज ऑल्सो यूज टू रिलीव द सीजनल पेरिनियल पोलिनोसिस, यूज्ड इन द सर्टेन केस ऑफ कुशिंग डिसीज। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसमें भी यूज करते हैं इसको एज अ एपेटाइट स्टिमुलेंट इन द सर्टेन कंडीशन। नेक्स्ट वन इज द पिज़ोटिफेन, so antihistaminic and 5-HT receptor antagonist, structurally related to tricyclic antidepressant and used in the prophylaxis of migraine and other vascular headaches। तो माइग्रेन जैसे दूसरा कोई हेडेक होगा वेस्कुलर ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन, इसको यूज करें। नाउ ऑन्डेनसेट्रॉन, इट इज अ स्पेसिफिक 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ऑन्डेनसेट्रॉन क्या है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग ड्यू टू साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड रेडियोथेरेपी। तो एंटी कैंसर ड्रग का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होता है, या फिर रेडियोथेरेपी अगर लिया आपने तो उसकी वजह से भी वोमिटिंग होता है। सो टू कंट्रोल दैट ऑन्डेनसेट्रॉन इज यूज्ड। ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, देन अलोसेट्रॉन, दीज आर द अदर सिमिलर ड्रग। ऑन्डेनसेट्रॉन है, उसकी भाई बंदूकों ने ग्रेनीसेट्रॉन, अलोसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, अलोसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन, ये भाई बंदू है। Now next drug is a clozapine. Actually, clozapine is a antipsychotic drug. Okay, clozapine is an atypical antipsychotic drug, and it also has a 5-HT2A 2C receptor antagonism on antagonistic action. तो इसको मैंने पहले बोला है एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है उसको भी ये थोड़ा बहुत 5-HT को ब्लॉक करेंगे। ओके, सो एंटीसाइकोटिक ड्रग लाइक क्लोज़ापिन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उस टाइम पे बोला था मैंने। So classification of antipsychotics: first generation means typical antipsychotics and second generation means atypical antipsychotics। ये उस टाइम पे भी बोलता है। फर्स्ट जनरेशन में फ्लोनाथाइजिन, बीटा रैपिनोन, हैलोपेरिडोल वगैरह वो आता है, ठीक है। सेकंड जनरेशन में आता है आपको क्लोज़ापिन, इट वाज द फर्स्ट ड्रग, सेकंड जनरेशन क्लोज़ापिन, देन रेस्पेरिडोन सेकंड जनरेशन में आता है, ठीक है। सो दैट इज अनदर पार्ट। नाउ फार्माकोथेरेपी ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फार्माकोथेरेपी ऑफ माइग्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज माइग्रेन। माइग्रेन मींस इट इज अ यूनिलैटरल और बायलैटरल हेडेक। यूनिलैटरल मतलब एक साइड पे, बायलैटरल मतलब दोनों साइड पे। वी यूज्ड टू कॉल इन द मराठी अर्ध डोकं दुखतं म्हणजे माइग्रेन। सो यूनिलैटरल मीन्स वन साइडेड, बायलैटरल मीन्स टू साइडेड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेन: migraine with aura, also known as a classical migraine, and another type is a migraine without aura, also known as a common migraine। ये दो टाइप होते हैं माइग्रेन के। माइग्रेन विद aura is known as a classical migraine, migraine without aura known as a common migraine। Okay? Now migraine attack can be because of the different reason। ये जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर करने का रीजन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए साउंड, किसी को साउंड आ गया, साउंड बहुत ज़्यादा साउंड हो गया तो वो उसको माइग्रेन हो जाएगा। देन
पर्टिकुलर स्क्रीन, कोई इल्यूजन है स्क्रीन के ऊपर, उसकी वजह से भी उसको माइग्रेन हो सकता है। या फिर कोई स्ट्रेस, सो स्ट्रेस, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन, that triggers the attack of migraine. Okay, so migraine is nothing but the episode of headache. Migraine is nothing but the episode of headache which may be unilateral or bilateral. थ्रॉबिंग क्वालिटी ऑफ हेडेक एक्सरबेटेड बाय फिजिकल एक्टिविटी। जैसे आपने कुछ एक्सरसाइज किया फिर भी आपको उसके बाद में माइग्रेन का अटैक आ सकता है आपको, या फिर आप कोई एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन पे लेके गए तो वहाँ पे माइग्रेन का अटैक आ सकता है। या फिर कोई बड़ा साउंड सुना, जैसे मान लीजिए कोई जैसे पटाखे होते हैं फायरवर्क्स, बड़ा वाला फोड़ दिया किसी ने आपके नज़दीक, तो आपको माइग्रेन हो जाएगा। सो देर आर डिफरेंट रीजन फॉर triggering the attacks. Now, attacks of headache may be triggered by food, visual stimuli, impeding menstruation. ठीक है, ये यहाँ पे reasons है उसके। Okay, triggered by food, visual stimuli, impeding menstruation in the ladies and relaxation after emotional tension. जैसे इमोशनल आपको बहुत स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स हो गए तो आपको हेडेक हो जाएगा। दैट इज माइग्रेन, नॉट अ नॉर्मल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हेडेक एंड माइग्रेन। Okay, so migraine most of the times it is a unilateral. It is a unilateral most of the time. Bilateral नहीं होता है, unilaterally होता है। Pathology of migraine क्यों होता है? It involves the abnormal certain serotonin transmission in the CNS. तो serotonin का abnormal transmission होता है वहाँ पे CNS में. That is nothing but that leads to migraine. Okay. Now there is another one, calcitonin gene related peptide. CGRP, calcitonin related peptide, released from trigeminal nerve. Okay, trigeminal nerve जो होता है उसके एंडिंग में वहां से पेप्टाइड निकलता है, calcitonin gene related peptide, and okay, and this peptide plays major role in the genesis of migraine. तो migraine इसकी वजह से भी होता है, okay, hereditary भी होता है, so it is a hereditary calcitonin gene related peptide जो होता है, that has a important role in the genesis of migraine and other vascular headache. Migraine plus other vascular headache. For the acute attack of migraine, the drug of choice is nothing but the sumatriptan. For the acute attack of migraine, drug of choice is a sumatriptan. Remember, and other drug are also used. For example, aspirin, paracetamol, codeine, and other NSAID, ergotamine, metoclopramide, haloperidol, then prochlorperazine. They are also used. But drug of choice for acute migraine attack is a sumatriptan, and ergotamines are also used. Now, for prophylaxis purpose, for prevention, remember the drug of choice is nothing but the beta blocker, that is known as a propranolol. So prophylactically, beta adrenergic blocker propranolol is the most commonly used. ये दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. So drug of choice in the acute attack of migraine, sumatriptan, and prophylactic drug is nothing but the beta blocker propranolol. Other drugs are also used. For example, tricyclic antidepressant, calcium channel blockers like verapamil, and anticonvulsant drug like valproate and gabapentin. These drugs are also used prophylactically to prevent the attacks of migraine, but most commonly used prophylactically, that is a propranolol. Remember this. Okay. Now another methyl sargide, cyproheptadine, tricyclic antidepressant, they are also used. Now recently one drug is approved known as onabotulinum toxin. Onabotulinum toxin is a recently approved drug for prophylaxis of migraine. But कब, जब migraine आपको 12 weeks से ज़्यादा है. So if you have migraine of 12 weeks and more etiology, then onabotulinum toxin is. If headache is more than 14 days per month, topiramide, okay, topiramide is anticonvulsant drug also approved for prophylaxis of migraine. ये कुछ important points हैं. Now you can see the management of migraine. अगर आपको migraine का है तो उसमें management treatment कैसे करें? Management of migraine. For acute attack, what are the drugs? For acute attack, initially try NSAIDs, paracetamol and other NSAIDs. If it is not relieved, if you are not getting relief, then shift to these drugs, triptans or ergotamine plus caffeine. Still you will not get relief. उसके बाद में opioid analgesic, opioids and droperidol and other tolerant, okay, other opioids and droperidol. In patient opioid tolerant patient जिसको tolerance नहीं है,
Then if still it is not relieved, then you have to go for propofol. Propofol is nothing but the anesthetic. Okay, तब जाके आपको रिलीफ नहीं। इनिशियली आपको पैरासिटामोल वगैरह लेने से ट्राई करना है, मतलब आपको नहीं डॉक्टर को, ठीक है, नहीं तो आप खुद से ही ट्राई मत करो। देन उससे कवर नहीं होता है तो ट्रिप्टान लाइक सोमाट्रिप्टान एंड ऑल दैट यूज करना है, या फिर आर्गोटामाइन एंड दिस वन प्लस कैफीन। उससे भी नहीं हुआ तो फिर ओपाइड एनाल्जेसिक यूज करो, और उससे भी नहीं हुआ तो फिर एनेस्थेटिक। नाउ ड्रग फॉर प्रोफिलैक्सिस, दीज आर द ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? सोमाट्रिप्टान। नाउ फॉर ड्रग फॉर प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन। सो फॉर प्रोफिलैक्ट के लिए बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड कॉमनली, most commonly propranolol. Timolol, nodelol can also be used, but remember it is a drug of choice. Propranolol is a drug of choice for prophylaxis of your migraine. Okay. Then calcium channel blockers can be used. Calcium channel blockers are also used, like these flunarizine, diltiazem, verapamil, nimlodipine. These are the calcium channel blockers. Then tricyclic antidepressant like amitriptyline, nortriptyline, imipramine. Then anti-epileptic like topiramate, valproate, and gabapentin. Then methyl sergide, ciproheptadine, clonidine, then candice and lastly botulinum toxin is recently approved drug for prophylaxis. So this was regarding the migraine.